चलें Bismillahirrahmanirrahim. So guys, we'll continue with actually what we were doing yesterday. हम लोगों ने कल guys लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था, ठीक है। और हमने ये वाला जो किया था guys, याद रखें ये वन डायमेंशन में। अच्छा, दिस इज 1D। अब जरा हम लोग बात करते हैं 2D में क्या होता है। 2D से मेरे पास क्या मुराद है कि वो ऊपर भी जा रहा है, वो लेफ्ट राइट भी जा रहा है। 2D वो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर नीचे, या लेफ्ट राइट, बट एक्चुअली दोनों एक साथ। 1D का मतलब है ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, और 2D का मतलब है जब आप इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट डायगनली जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओ सॉरी 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 फजान, whenever I switch to Urdu you can remind me, okay? So guys, 2D is when an object is moving in both dimensions simultaneously. It's also moving in the y direction and it's also moving in the x direction, something like this. So basically, we can call it diagonal motion, in which both your horizontal axis and vertical axis is being covered. You guys now understand 1D and 2D, right? You did 1D, you did all the questions that we have been doing or did in our O levels or IG were all 1D. Now we'll start with 2D. The concept is the same, it's almost the same, okay? Write it down. The momentum before and after in each dimension is the same. A before and after collision, by the way. A collision in each dimension is the same. Now let's suppose I have a object moving in a 2 kg ball moving at an angle of 30 degree. Speed is, let's suppose, 50 meters per second. It collides with a ball which is traveling towards the right with a speed of, let's suppose, 25 meters per second. And the mass of the object is 4 kilograms. This is the before scenario. Afterwards, this 2 kg ball, is still moving. Now we can change the scenario that both of these balls stick together. Both of these balls stick together. And we need to find their final speed, okay? हमने V find करना है कि at what angle or what is the velocity. Now guys, this is a very one of those difficult questions. But if you get done with this, आपके लिए बाकी you will be able to solve all the remaining ones. So my formula is again the same. It will be the same. M1 U1 plus M2 U2 plus M1 V1 plus M2 V2. It's the same over here. But what is happening? First, we will deal with our let's deal with our horizontal direction. So what's our horizontal momentum? First of all, M1 is going to be the same to U1. Now, guys, if I'm dealing with my horizontal motion, what should be my U1? I'm talking about the horizontal motion. So what's going to be my U1? 50 cos 30, correct? Plus M2, 4. And what should be my U2? What should be my initial horizontal velocity?
for object number 2. 25. Why did I take it as 25? Because this object is only traveling in the horizontal direction. It has no vertical component. It has no vertical component. Is equal to M1 and M2. Acha, always remember, when both of these stick together, you just add their masses. So it's going to be 6. So it's going to be U V1 plus 6V1 and sorry, not 6, 4. 4V1. So can someone solve this for me? Can you give me your answer for VH actually? We're talking about the horizontal force, okay? Horizontal velocity. Can someone give me the answer? What's my horizontal component? 31.1. So I'm just going to take it as 30 for my ease, okay? I'm going to take it as 30. So the horizontal, by the way, you have to take it as 31. 31 ही कर लेते हैं ना, आप लोग बाकी जाके गलती कर दे आगे. So my horizontal component is 31. Now I need to find the vertical component, right? I need to find this vertical component as well. I'm going to do this again. I want you guys to note this down. First of all, if you have any issues, ask. If not, I will continue with the second part of this question. That is finding your vertical velocity. No issues? Perfect. Now let's start with our vertical velocity. Again, we'll use the same formula. So my m is going to be 2. My vertical velocity, what's going to be my u1? Fatma, you first find the horizontal component. Say you find the vertical component, and then you find, using both those components, you find the velocity and then you find the angle as well. We're going to do all of those parts. So guys, it's going to be 2 into 50 sine 30 plus, what's going to be the vertical component of this object? 4 multiplied by what? 4 into what, guys? Zero. No, not 4 cos theta or anything. It's going to be 4 into 0. Again, guys, I'm talking about the vertical component now. So, इसका कोई vertical component नहीं है. It's only traveling in the horizontal direction. Do you guys get me? Do you understand that मैंने 0 क्यों use किया? Is equal to 6VV. Can someone solve this for me? It's going to be 2 into 25, 50 over 6 VV, which, if I'm not wrong, is equal to 8.3. I'm going to take it as 8, okay? 8 meters per second. So my velocity is equal to 8 meters per second, vertical velocity, and my horizontal velocity is equal to 31 meters per second. I'm going to rewrite this over here. Both the objects are now stuck together. The vertical component is 8 meters per second. The horizontal component is 31 meters per second. I want to find the velocity, right? इसकी एक velocity होगी, तो मैं कैसे करूँगा? 31 square. It's just Pythagoras, by the way, okay? If I make this over here, 8 meters per second. It's going to be 31 square plus 8 square is equal to h square.
So can someone let me know what's the answer for H? H or H? 32? So my speed is 32 meters per second. I also need to find this angle. So how do I find this angle? You need to remember this. Tan inverse over perpendicular over base is equal to your theta. वैसे तो मेरे पास सारी values I can use any, but I always use tan inverse, okay? So it's going to be tan inverse 8 over 31. So what's the answer for theta, guys? Theta 14.5. So we had nothing in the start of our question. They gave us no information. They gave us literally nothing. And they can, by using physics, we can derive all of this stuff. I'm going to zoom out. I'm going to give you guys 2 to 3 minutes if you want to note this down. And then I'm going to give you a question. If you're unable to solve that question, no worries. No worries at all. Okay. We'll take all the time we need. We're going to take it slowly कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए, ठीक है? So how did we get that? So can you repeat this? Just a rough overview. Okay, I will. So how did we get that 8 meters per second? We got it using our vertical velocity, vertical component. So you deal with the vertical momentum and the horizontal momentum differently, okay? You deal with it separately. Kinematics में या याद है हम लोग जो भी क्वेश्चन करते थे हम kinematics, we used to keep kinematics and we used to keep we used to keep your horizontal motion and your vertical motion completely different. याद है या तो इधर भी हम लोग वही करते हैं अच्छा. We solve our horizontal motion and our vertical motion separately. Again, Fatma, आपके लिए हम पहले horizontal motion, we find the momentum before for our horizontal motion, we equate it to the momentum after for our horizontal motion, and we do the same thing for our vertical motion, okay? हम लोग मोमेंटम्स को इक्वल पुट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर. हॉरिजॉन्टल को अलग पुट करेंगे, वर्टिकल को अलग पुट करेंगे. Should I give you guys a question? अच्छा. अगेन अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होता कोई टेंशन की बात नहीं है. इट्स ओके. 10 kg, 5 kg, 10 kg, and 5 kg. Find V and find this theta. The 5 kg object is at rest, by the way.
किसी को समझ नहीं आ रही, if someone is unable to understand, पूछ लें. This is difficult, but not very difficult. You just have to equate your horizontal momentum before to your horizontal momentum afterwards, and you have to equate your vertical momentum before to your vertical momentum afterwards, and then you just need to find the velocities. You'll get the velocities, then you find the final velocity, and then you can find the angle. Acha, it sounds very easy when you say this. करते वक्त I'm pretty sure it's a little more difficult. ऐसा ही है. वर्टिकल भी सेम है फातिमा. There is no literally no difference. There is literally no difference. जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल की है, ठीक है, 13.4 देख लेते हैं, बाकी भी कर लें. ऑल्सो फाइंड द एंगल. अब्दुल्ला, आई विल 2 मिनट फिर वेट कर लें, खैर है. आई जस्ट वांट एवरीवन टू गिव इट अ ट्राई. सब अपने अपने आंसर्स बताएं. अब्दुल्ला, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को बिफोर एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर को इक्वल पुट कर दें बस. गुड जॉब फातिमा, गुड जॉब. अब मुझे नहीं पता से आपका आंसर ठीक है या नहीं, बट लुक्स थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक है.
अच्छा guys, let's try this question out. I see you have almost the same answers, but not exactly the same answer. Horizontal momentum before is equal to horizontal momentum afterwards. M1, 10. U1 is going to be 20 cos 30 plus 0. Why 0? Because U2 is 0. तो वो पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है. आगे guys हमारे पास M1 is going to be 10 plus VH plus 5 VH. ठीक, इक्वल कर लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? Can someone let me know the answer for this? 11.6 meters per second. So my horizontal velocity is 11.6 meters per second. Abdullah, is this clear? One plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. अब वर्टिकल के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है? Yes, Fatma. Again, vertical के लिए it's gonna be 10 into U1 20 sine 30. Again plus 0 because it's good. Second object हमारा मूव ही नहीं कर रहा. And then again 15 VV. इसका मुझे आंसर बताएं क्या आता है? 10 into 25 100 पता नहीं 6.7 meters per second. Abdullah, is this clear? So this is going to be 6.7 meters per second. जी. वेद सर की नेक्स्ट. अच्छा गाइस, आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूजन क्यों हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इट्स लिटरली द सेम थिंग. यू यूज cos फॉर हॉरिजॉन्टल एंड यू यूज sin फॉर वर्टिकल. बस फर्क ये है. सो इट्स गोना बी 10 into 10 into 20 sin 30 20 into sin 30 वर्टिकल वेलोसिटी. देखिए sin 30 हमारे पास क्या करेगा? वर्टिकल वेलोसिटी देगा ना. प्लस 0 is equal to 15 v. Okay. So now we have our horizontal as 11.6. Oh, ये क्या हो गया? We have our horizontal as 11.6. We have our vertical as 6.7. So what's my velocity, guys? Velocity क्या होगी? Pythagoras. 13.3. And what's going to be my theta? Tan inverse 6.7 over 11.6. 30 आंसर आ रहा है. तो guys ये ले आपका क्वेश्चन हो गया. बताएं क्या मुश्किल था इसमें? बताएं शहजादो, क्या मुश्किल था? It's fun, right? This is my favorite chapter, by the way. I really love this chapter for some reason. Abdullah, that's pretty much my job. I'm gonna explain that 10 times. Don't worry. जितने सवाल हैं पूछें guys. शर्माना नहीं है. मतलब बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह सवाल सवाल पूछा करें जब भी इशू हो. मतलब आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो बड़े शर्म में आ जाते हैं, हम क्या सवाल पूछेंगे. डोंट वरी. अच्छा. एंड आई प्रीटी श्योर एक महीने में मैंने कभी किसी को सवाल पे टोका नहीं होगा, राइट? आई डोंट रिमेम्बर मैंने टोका किसी को. तो मतलब पूछा करें. एक और सवाल कर लेते हैं या कोई. लेट्स गो फॉर सम. लेट मी थिंक ऑफ अ फन क्वेश्चन. लेट मी थिंक ऑफ अ फन क्वेश्चन. फन क्वेश्चन क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 50 meters per second, 30 एंगल. यहां से एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है
5 meters, 5 kg, 10 kg, 50 meters per second, same 30 angle. They both collide and stick together. So yeah, 5 and 10. I want you guys to find its final speed and its direction as well. Because इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी आएगा. अच्छा याद रखिए जब भी मैं अंदर वैल्यू लिखता हूँ वो मास होते हैं. अच्छा चलें करेंगे. टेक योर टाइम. कोई जल्दी नहीं है. आज पूरी क्लास में सिर्फ हम लोग ये 4-5 एग्जांपल्स करेंगे. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड अगेन द स्पीड. वी फाइंड करना है आपने. वी. जल्दी जल्दी जल्दी. नॉट लाइक जल्दी जल्दी बट लाइक जल्दी जल्दी.
सर वेलोसिटी 50 से आ रही है एंगल 39। अब फातिमा इधर देखिए, दीज आर इन बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से आपने ऐड अप कर दी है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। देखिए इधर हॉरिजॉन्टल मोशन सब्ट्रैक्ट होगा और वर्टिकल मोशन ऐड अप होगा। ठीक है। गाइस आया कोई आंसर? समझ आइए। अरे pythagoras तो आप हमेशा ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होता कभी भी। चलिए गाइस मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी। आई बिलीव आप सब लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। एंड अगेन देखें, दिमाग लड़ा के पूरी बात समझ आएगी। यह हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस। तो मुझे फॉर्मूला लिखने में गाइस बहुत मौत आती है बार बार, इतना लंबा फॉर्मूला है। अच्छा, पहले मेरे पास है 5 × 50 cos 30। ठीक है। प्लस 10 इंटू, अब यहां मेरे पास आएगा -50।
क्यों माइनस क्यों आएगा? क्योंकि गाइस दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इज इक्वल टू अगेन वही 15, दोनों का मास ऐड कर दें वी एच। इसका आंसर क्या आता है? वी एच इज इक्वल टू -14.4, सो इट मीन्स 14.4 इन द लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन। ये बात क्लियर है सबको? ये 14.4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई नीड a yes from everyone, hurry up. Abdullah, Fizan, Yahya, Tamur, Yusuf, Fatma. And I'm going to do the same thing for vertical. But vertical is going to be 5 into 50 sine 30 plus 10 into 50 sine 30. Why am I adding these? Because both of these momentum are in the same direction, is equal to 15 VV. What's the answer for this? 25. आगे तो guys it's same. 14.4, 25. H square is equal to B square plus P square. Under root 25 square plus 14.4 square. इससे क्या आंसर आएगा? 28.9. एंड एंगल के लिए मैं क्या करूंगा? tan inverse of what? 25 over 14.4. इससे क्या आंसर आएगा? 60 degrees. थीटा is equal to 60 degrees. तो आई बिलीव जो तीन चार बच्चे उन्होंने तो बिल्कुल पहले भी सही आंसर बताए हैं। एंड आई बिलीव एक दो अगर किसी को अभी भी अनक्लियर है तो वो क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर यूसुफ? यूसुफ कुरैशी। यूसुफ कुरैशी। तैमूर खहर। या फजान फातिमा अब्दुल्ला। बस आज हमने आई नो सिर्फ तीन चार क्वेश्चंस किए, बट ये तीन चार क्वेश्चंस आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है? विद दैट विल बी इट फॉर टुडेस क्लास।